that's all from the implementation details of stack using linked list. So just give this exe to your friends and enjoy the output. Okay, your friend might be feeling that, oh, you are the great coder. So for this particular scenario, you are the developer and he is the user. Now wait, why I am telling you this all these things? Because I am going to launch a value bomb over here. Okay, let's understand the scenario. So who you are? You are the developer. Okay, you are the developer who created exe file or who write the main function. Done. And who is user? User is the one who is using exe. But if you can see the code and be honest to yourself, you are also the user who is using the header file which is created by someone else. We are using header file iostream.h which is created by someone else. So you are again a user who is using header file to write this main function. Okay, and the one who created this header file.h is the developer for you. Okay, now why I am telling you all these things? Now consider a scenario that you are having a friend, okay, who is developing a certain software, and for that particular software he needs the concept of stack, and he knows that. Who writes the code better way in the stack? That's you. Okay, so he approached you that, friend, just give me the code of stack so that I can develop this particular software, okay, and earn a lot of money from that particular software. So you might be thinking that, oh great, I can write the code of stack and you are going to implement the software with the help of my code and earn a lot of money, so I should also get something from that. Okay, so you ask him that, okay, give me certain money, X amount of percentage from your software so that I should also feel good. Okay, so your friend, okay, I'll give you particular X percentage of money. So you are smart enough. What you are doing? You are telling him like the website telling us the plan. That is, for example, this is my budget plan and this is my pro plan. So you are giving your friend two plans. So friend, there are two plans. Suppose if you want to create a stack, this is a budget plan in which you can create a stack for 100 user or 100 elements, or in which you can use the data for 100 user. This is one budget plan. And this is one pro plan in which you can create the stack for unlimited user. Unlimited user or unlimited elements you can store into this stack. But for that you need to take this pro plan, and it charges is something, let's say XYZ, and its charges is something ABC. यही होता है ना जब भी तुम कोई डोमेन खरीदने जाओ या फिर कोई भी प्लान खरीदने जाओ. ओके, यही होता है. दे आर शोइंग यू द कंप्लीट दिस टू प्लान्स. ओके, एंड they are just telling you the features of this plan, but they keep the implementation details of this plans hidden from you guys. Likewise you are doing, you are just giving your friend these two plans and the plan feature, and by hiding all the details that this particular plan is, this particular stack you are implementing with the help of array, and this particular stack जिसमें कभी मेमोरी फुल नहीं होती है, that you are going to implement by using linked list, but you keep all these details hidden from user. Okay, so based on the budget, your friend choose a particular plan. So what's your task? So you need to create one header file which is called as, let's say, budget.h, my one header file. You need to create another header file, it is pro.h. Likewise we are using iostream.h. आपने को पता है कि iostream.h के अंदर क्या है, कैसे लिख के रखा है? नहीं. Okay, we are just include iostream.h. Likewise you are telling your friend that, friend, don't worry, just use my header file #include budget.h and use. And if you are having good budget, just include the header file pro.h. ठीक है? So तुम कौन बन गए? तुम बन गए डेवलपर. ये पर्टिकुलर डेवलपर तुम बन गए, ये डेवलपर जो बना रहा है अभी हेडर फाइल budget.h और pro.h. तुम्हारा फ्रेंड जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो बन गया इंटरमीडिएट यूजर. Intermediate user who will create the main function. Intermediate user who will create the main function, and उसका user, the end user who is going to use the exe file through this main function is the end user. ठीक है? So let's think like a developer.
and understand how can we create the header file with simple 2 or 3 steps. Done? So let's go to the code. So how to create this header file? So just copy the code from this hash include std.h to main function. ये पूरा कोड कॉपी कर लो क्योंकि यही तो एडीटी है, यही तो एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। तो मुझे हाइड करके रखना है इस इंटरमीडिएट यूजर से। सो जस्ट कट दिस पार्ट and create new header file, let's say pro.h. So just paste it and I am writing the header file name, that is nothing but the pro.h. So my one header file is created. That's it guys, don't worry, that's it, it's so simple. Okay, similarly अब मुझे budget.h बनाना है तो क्या अपना जो previous video का कोड रहता है, that is stack implementation using array, उसमें का ऊपर वाला ADT का कोड will just copy and paste, okay, and paste into another file. Let's call that file that the budget.h. So ये particular file बन गई मेरी budget.h, ठीक है। अब यहाँ तक के तुम्हारा काम खत्म हो गया as a lead developer, okay. So तुमने header file बना के दे दी अपने friends को. So create use my two header files, that is budget.h and pro.h. So what your intermediate user, that is your what your friend will do, he will just write down hash include pro.h. अब as it's a user created header file, so we need to include this header file into the two double quotes. एंगुलर ब्रैकेट तब यूज होता है जब तुम्हारी हेडर फाइल प्री डिफाइंड रहेगी, ये सारी चीजें हो चुकी है, हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव नाइसली डिस्कस इन आवर प्रीरिक्विजिट सेक्शन, ओके। वो डेटा स्ट्रक्चर वाला कोर्स जाके देखो, कोई भी बातें स्किप नहीं करनी, इंजीनियरिंग इंक्लूड से वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सो हैश इंक्लूड hashtag.h, हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, ऑल दिस सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। डबल कोट्स के अंदर क्या pro.h। अब तुमने एक हेडर फाइल क्रिएट की है, सो टेल द कंपाइलर वेयर योर हेडर फाइल इज लोकेटेड। सो कहां पे है तुम्हारी हेडर फाइल, सो कॉपी द पाथ फॉर दिस budget.header फाइल, कहां पे मिलेगा तुम्हें, प्रॉपर्टीज एंड देन कॉपी द पाथ, यस जस्ट कॉपी दिस पाथ and once I copy, write down this path into the double quotes. So hash include this path and your header file budget.h, that's it। तुम्हारे हेडर फाइल ने जस्ट लाइक html.h तुम्हारे हेडर या फिर तुम्हारे फ्रेंड ने हेडर फाइल budget.h इंक्लूड कर दिए। नाउ ही विल राइट इट्स मेन फंक्शन कोड, डन, जो अपन ने ऑलरेडी लिख के रखा है। सो इंट मेन, सो ये काम इसका चल रहा है तुम्हारे फ्रेंड का जो है इंटरमीडिएट यूजर। So just copy and paste the code, that's it, int main and done। So just save and compile and execute this, which will get me this output, and this output कौन यूज करने वाला है, this end user, ओके। ये एंड यूजर डायरेक्टली जाएगा, ओके हाँ चलो मुझे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो माय चॉइस इज 1, एंटर द डेटा टू बी पुश्ड, वाओ नाइस सॉफ्टवेयर, सो डेटा इज 8, yes to be continue, again will perform certain push operation, let's say data is 7, continue, display all the elements of stack, okay, yes software is working fine, end user is happy, end user happy है तो तुम्हारा फ्रेंड भी हैप्पी है, और तुमने क्या किया है, स्मार्टली उसको सिर्फ stack.h की हेडर फाइल जो कोड था वो सिर्फ तुमने उसको हेडर फाइल दे दी। So your friend is completely unaware about the stack.h or the budget.h header file। Done। अगर तुम्हारे फ्रेंड ने चूज किया रहता कि मुझे pro.h चाहिए, instead of budget.h just write down pro.h because both the files are located at the same directory। So yes, again this will work fine if I save and execute this, yes it gives me the output, yes this will work fine। So that's all। one more thing is remain guys, जितना dig out करोगे उतना कम ही है। For example, now might be it is the case that your intermediate user, that is your friend is smart enough, वो भी तुम्हारे साथ का है, तो what he will do, he will directly go to your header file। ये header file तूने मुझे दी थी ना, okay, let's check this, what is this header file। So if I double click on this, my header file is created and he will get the access of this complete code, okay। तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एक बार तुमने हेडर फाइल बना दी, then what next, तुम्हारा फ्रेंड by using this header file will create the n number of softwares, and of course you don't want that, because what you want, जितनी भी बात तुम्हारा फ्रेंड वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाएगा using your header file, you have to get certain royalty from that software। So what you need to do, you need to just hide this implementation details from that particular your friend। So instead of giving him a header file, you just give him the libraries। So you need to, instead of header file तुम्हें उसको library देनी पड़ेगी, लेकिन अब header file से library कैसे बनानी है,
उसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट। प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम डॉट सी से डॉट exe कैसे बनती है, which are the intermediate step that your processor or compiler or interpreter follows, that all that we are going to study in the operating system concept। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कोर्स में अपन देखेंगे ये सारी चीजें की प्रोसेस क्या होती है, दैट इज how your program is converted into the process, which are the libraries, which are the system calls, all these things that we are going to study in the operating system course. That's called as the system software things. That means you are creating a software for a particular system. That software के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है system software, another is the application software। ये होता है system software जहाँ पे तुम ड्राइवर्स, हेडर फाइल्स या लाइब्रेरीज बनाओगे। एक होता है application software, जैसे तुम्हारे यहाँ पे मोबाइल पे व्हाट्सएप है, ओके, तुम्हारे डेस्कटॉप पे लेट्स सी योर VLC is application software, okay, your banking software is also application software। लेकिन वो application software कभी ऐसे नहीं होते command line prompt। For example, this is output, so those software are not having the look and feel like this, that is a black background and this white text। इसको most of the लोग softwares नहीं कहेंगे, softwares कहेंगे जहाँ पे GUI है, जहाँ पे ढेर सारी images है, जहाँ पे buttons है, very nice looking GUI है, which is called as a software। but यहाँ पे तो लेकिन समझना चाहिए, सॉफ्टवेयर का GUI लुक एंड फील कैसा भी रहने दो, मेन रोल कौन प्ले करता है, जो ये हेडर फाइल या फिर बैकग्राउंड का लॉजिक लिखता है, और उसके लिए तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, and how to create that good looking very interactive and impressive GUI। For that purpose we have created the course that is GUI application, that is already on YouTube as well as on the same website। ओके आपको नहीं मिल रहा है, काइंडली रीच अस एट letstalk@engineeringtunes.com और यूज द डिस्कशन सेक्शन। ओके, और ये भी वीडियो YouTube पे भी जाने वाला है। सो गाइस, इफ यू लाइक द कंसेप्ट, इफ यू enjoy or started enjoying the programming, create your own header file। and guys, really we are very much eager to know how our users and friends are developing a software or code or understanding the concept of computer field। गाइस, नेक्स्ट बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हमको यहाँ पे बनाने हैं। ओके, वी डोंट वांट टू पुट द स्टेटस ऑफ इलॉन मस्क, जुकरबर्ग और इन बड़े लोगों के सिर्फ मुझे स्टेटस ही रखना है, बस इनको फॉलो भी करना अच्छी तरह से, उनके जैसे बनना भी है, एंड बस इतना ही कहूंगा। गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग, क्रिएट द बेस्ट सॉफ्टवेयर। वी आर वेरी मच ईगर टू नो योर प्लान्स एंड योर सॉफ्टवेयर। सो kindly reach us at letstalk@engineeringtunes.com if you are having any help in any particular programming language or don't know how to start programming, where to start programming, you are curious about AWS thing, machine learning thing, deep learning, AI है, डेटाबेस है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में कहाँ से शुरुआत करूँ, पाइथन सीखूँ, जावास्क्रिप्ट सीखूँ, जावा सीखूँ, डॉटनेट सीखूँ, C# सीखूँ, या CPP या फिर डेटा स्ट्रक्चर सीखूँ, मैं सीखूँ क्या? So guys, we are having a clear cut plan for that। We know why engineer is different than the basic trained guy। Trained guy knows how to develop a good looking GUI by using a specialized or particular software or particular technology only। but engineer वो बंदा है जिसको तुम किसी भी सिनारियो में डाल दो, किसी भी सिनारियो में डाल दो, वो वहां पे खुश रहेगा। नॉट ओनली दैट, ही विल प्रूव हिज एग्जिस्टेंस इनटू दैट प्लेस एंड पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और तुमको वही बनना है। Okay, so guys, best of luck for your coding and programming journey। If you are having any doubt, kindly reach out at letstalk@engineering.com, and don't forget to share this video to your friends and like and review us। ठीक है, that's all। So thanks for joining Engineering Tunes, where engineering